ඒක අපි කියන්නේ අපි දැන් මාස 6 දෙකමාරක් විතර ට්‍රේනින් කරලා මෙම තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලැබ මේ තියෙන තරඟ ජයග්‍රහණය කරලා අපි ඉදිරියට යන්න මේකට ගියා. දැන්ට නාවක පුහුණුකරුවෙක් යටතේ පුහුණුවීම් කරගෙන ගිහලා අලුත් පේස්ලා කණ්ඩායමට එකතු වෙලා ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලෝ කට්ටිය එකතු කරගෙන තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මාස 2ක පුහුණුවීම් කරලා කණ්ඩායම එකමුතුව තරඟාවලිය මැච් අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තරඟාවලිය ඇත්තටම තරඟාවලියෙන් තරඟ ජයග්‍රහණය කර අවසන් මහා තරඟයට තරඟ වැදීමට තමයි අපි කැමති.
बैक रो अटैक बहुत उम्दा, कोई चांस नहीं दूसरों के पास बॉल को रिट्रीव करने का। 5 ये 17 नहीं थी और उज़्बेकिस्तान wins the match. ये बैक रो और 10 टच। रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और खूबसूरत सुबह यहाँ के जिम्नेजियम इस्लामाबाद से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोंग 5G कावा मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय विकोटेल मैच नंबर 7 में उज़्बेकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा अगर हम आज खेले जाने वाले मजीद मैचेस का जिक्र करें तो मुकामी वक्त के मुताबिक 2:30 पर बांग्लादेश और काजाकिस्तान की टीमें इन एक्शन आएंगी, जबकि शाम 5 बजे होम टीम पाकिस्तान नेपाल के अगेंस्ट इन एक्शन आएगी। प्री मैच शो में कुछ आमदीद, उम्मीद करते हैं कि आप ये शानदार मुकाबले एंजॉय कर रहे होंगे। जोंग 5G कावा मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय वीगोटेल के मोहम्मद तौफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनको खैर मकदम करते हैं, जुमा मुबारक तौफीक साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो कल के मैचेस बहुत शानदार रहे। जोंग 5G मेंस नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय वीगोटेल में हमें 2 5 सेटर कल देखने को मिले। उज़्बेकिस्तान काजाकिस्तान का 5 सेटर रहा, देन श्रीलंका ने जो अपना पहला मुकाबला किया नेपाल के अगेंस्ट वो भी 5 सेटर रहा। तो अच्छी क्वालिटी वॉलीबॉल हमें देखने को मिल रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया नुमान चौधरी। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आदाब अर्ज़ और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी जहां आप हमें सुन और देख रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुशगवार सुबह इस्लामाबाद की और एवर स्माइलिंग नुमान चौधरी यंग नौजवान डे 2 का हम रिकैप आपको दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब तक जो 6 मैचेस हुए हैं उनमें सबसे अच्छा स्किल के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से मैच कल हुआ काजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान का। मगर ये मेडल टेबल, अगर ये पॉइंट्स टेबल आप देख लें तो पाकिस्तान कंफर्टेबली प्लेस है। दोनों मैचेस स्ट्रेट 3 सेट्स में जीतकर टॉप ऑफ द टेबल है। काजाकिस्तान दूसरे नंबर पर है और उज़्बेकिस्तान तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश चौथे, श्रीलंका 5वें, नेपाल 6ठे नंबर पर है। तो मैं बात कर रहा था जो कल मैच हुआ नोमान, वो स्पीड, स्किल और टेक्निक के लिहाज से मेरे ख्याल से एक मास्टर क्लास थी वॉलीबॉल के स्टूडेंट्स के लिए। काजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान न सिर्फ ये कि दोनों ने मॉडर्न वॉलीबॉल खेली, मगर जिस पेस पे वो खेले और 5वें सेट में उन्होंने उस पेस को ड्रॉप नहीं होने दिया, उससे उनकी पीक फिटनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके बावजूद कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड और होम क्राउड की एडवांटेज ज़रूर हासिल है, मगर मैं समझता हूँ कि इट विल नॉट बी अ केक वॉक फॉर पाकिस्तान व्हेन दे आर पिचेड अगेंस्ट काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। जी, अगर हम उज़्बेकिस्तान की सबसे पहले बात करें तो ओवरऑल इस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 मैचेस खेले। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 5 सेटर खेला और कल काजाकिस्तान के अगेंस्ट भी 5 सेटर खेला। तो दोनों मैचेस ही 5 सेटर खेल कर आ रही है इस मुकाबले में उज़्बेकिस्तान की टीम। और ओवरऑल एक अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दिया। कदरे यंग टीम है विद एवरेज एज ऑफ 22। नाज़रीन, हमारे लिए मौका है कि हम दोनों टीमों का एक अजमाली खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर दें। इस वक्त आप देख रहे हैं श्रीलंका के खिलाड़ियों को। इस वक्त एशियाई रैंकिंग इनकी 17वीं है और आलमी रैंकिंग 66 है। एवरेज हाइट इनकी 186 है। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं और एवरेज एज 28 है। ये इस्लामाबाद जो पोजीशन ऑपोजिट पे खेलते हैं, हाइट से 200 सेंटीमीटर है। स्पाइक हाइट उनकी 340 और ब्लॉक हाइट 318 है। हम बात कर रहे थे श्रीलंका की टीम की। ब्लू कलर्स में ये आप देख रहे हैं श्रीलंका। एवरेज हाइट 186, एवरेज एज 28 साल। और जो 2 मैच अब तक खेल के यहाँ तक पहुँचे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था 0-3 से, और नेपाल के खिलाफ 3-2 से जीते हैं। ये जी हाँ, बिल्कुल। ये लेस प्लेयर इन्फो जर्सी नंबर 18 हेथा पुरागे
आउटसाइड हिटर की पोजीशन पर खेलते हैं। 188 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। डिप्टी जर्सी नंबर 18 और ऑब्वियसली श्रीलंका की ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये उनके मेन स्टे रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने इनका एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया। ओवरऑल इनकी जो वॉलीबॉल जर्नी है, किस तरह इन्होंने प्रोग्रेस किया, किस तरह ये अपनी टीम के लिए फ्यूचर प्लान्स देखते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं टीम के कप्तान। देखिए अभी කියන්නේ අපි දැන් මාස 6 දෙකමාරක් විතර ට්‍රේනින් කරලා මෙව තරගාවලිවලදී සුසුකම් ලැබුවා. මේ තියෙන තරග ජයග්‍රහණය කළා අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. දැනට නාවක පුහුණුකරුවෙක් යටතේ පුහුණුවීම් කරගෙන ගිහලා අලුත් පේස්ලා කණ්ඩායමට එකතු වෙලා ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලොත් කට්ටිය එකතු කරගෙන තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මාස 2ක පුහුණුවීම් කරලා කණ්ඩායම එකමුතුව තරගාවලිය මැච් අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තරගාවලිය ඇත්තටම තරගාවලියෙන් තරග ජයග්‍රහණය කර අවසන් මහා තරගයට තරග වැදීමට තමයි අපි කැමති. අපි තරග තුන් වතාවක් අපි දෙවතාවක් ජයග්‍රහණය කර තිබුණා. මෙවරාවේ තුන්වෙනි තරගාවලියට අපි තිබෙන තරග ජයග්‍රහණය කර මෙවරත් තරගාවලියේ සූරතාව ලබා ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. श्रीलंकन टीम के कप्तान डिप्टी बड़े पुरुमीद हैं कि उन्होंने एक यंग स्क्वाड को तश्कील दिया है और उन यंग स्क्वाड से उम्दा परफॉर्मेंस की तवक्को रखते हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम ने 2 मैचेस खेले हैं। कल उन्हें कामयाबी मिली नेपाल के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अगर हम बात करें टॉस की, तो अब से कुछ देर पहले दोनों टीमों के कप्तान जोंग 5G टॉस के लिए मौजूद थे। एक यूजुअल रिचुअल है, मैच ऑफिशियल्स के साथ दोनों कप्तान मौजूद होते हैं और श्रीलंका ने सर्विंग का फैसला किया है टॉस जीतने के बाद। और जोंग 5G टॉस आपने देखा। वीगोटेल प्रेडिक्शंस का वक्त हुआ चाहता है मोहम्मद तौफीक साहब। ओवरऑल अब तक तमाम तर प्रेडिक्शंस आपकी ठीक साबित हुई हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये टैली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर हो। श्रीलंका उज़्बेकिस्तान ऑन पेपर ऑब्वियसली श्रीलंका ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम दिखाई दे रही है और उज़्बेकिस्तान ने कल अपने से बड़ी टीम काज़ाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो किस तरफ आप जो है वो देख रहे हैं ये मैच जाता हुआ? देखिए, मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि मैंने फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल से पहले प्रिडिक्ट किया था स्पेन के बारे में। दैट प्रूव टू बी राइट। जैसे हम बताते हैं कि हम कोई नजूमी नहीं है, एजुकेटेड गेस्ट है और जो हमारी मुख्तसर सी नॉलेज है, मैं समझता हूं कि इस मैच में उज़्बेकिस्तान हॉट फेवरेट है। ये केक वॉक नहीं होगा, मगर उज़्बेकिस्तान ने जिस तरह कल अपने से कहीं बेहतर टीम को 5 सेट में शिकस्त दी, एक मौके पे यूं महसूस हो रहा था कि काज़ाकिस्तान ये मैच जीत जाएगी, मगर उज़्बेकिस्तान ने शिकस्त के जबड़े से फतह हासिल की है। तो मैं समझता हूं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होगा और वो दे विल एमर्ज एज अ विनर। जी बिल्कुल, तौफीक साहब के मुताबिक इस मुकाबले में उज़्बेकिस्तान की टीम जो है वो हॉट फेवरेट है। लेट्स सी दोनों टीम्स में से कौन जो है वो इमर्ज होते हैं विक्टोरियस। बट एक चीज़ की हमें उम्मीद है कि जोंग 5G कावा मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय वीगोटेल में एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। मोहम्मद तौफीक, नोमान चौधरी, इकरामुल हक खुश आमदीद कहते हैं। मैच नंबर 7 उज़्बेकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। टीपीटी प्रोडक्शन टीम फ्रेश एंड एनर्जेटिक एज एवर। तीसरे दिन का पहला मैच लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद से पाकिस्तान और राउंड द ग्लोब 8 रोज़ा टूर्नामेंट का आज तीसरा रोज़ है। मजमूई तौर पर 7वां मैच है। ये आप देख रहे हैं जिस अंदाज से इस मैच का आगाज़ हुआ। फर्स्ट ब्लड ड्रॉ किया उज़्बेकिस्तान की टीम ने और बड़ी मेहनत से नोमान चौधरी ने आदाद व शुमार इकट्ठे किए हैं हमारे लिए। वेरी हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, स्माइलिंग बॉय। एक्सीलेंट जॉब डन नोमान। और जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये उज़्बेकिस्तान की टीम ने मेरे ख्याल से कल चैम्पियनशिप का सबसे बड़ा मैच भी खेला और जीता भी। कजाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो 5वें नंबर की टीम है, 5वें नंबर उसके ख़िलाफ़ 16वें नंबर की टीम ने एक अपसेट विन हासिल की। मगर विन से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ मैच बहुत अच्छी थी। ये फर्स्ट रेफरी को आप देख रहे थे, शोएब मंशा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सेकंड रेफरी बिजॉय नेपाल से। तो कॉम्पिटेंट हैंड्स में है ये मैच। पाकिस्तान और नेपाल के ऑफिशियल सुपरवाइज कर रहे हैं। ये सेकंड रेफरी बिजॉय नेपाल से इनका ताल्लुक़ है। बहुत खुशगवार दिन। उज़्बेकिस्तान की टीम 1 पॉइंट की बढ़तरी ले चुकी है। उम्दा सेटिंग, लेकिन अच्छा रिट्रीव किया बॉल को मिडिल ब्लॉक करने श्रीलंका की जानिब से और शानदार ब्लॉकिंग। कॉन्फिडेंस जरूर आता है जब आप अपने से कितने बड़े ओपोनेंट को शिकस्त देते हैं और यही कॉन्फिडेंस जो है वो अब भरपूर अंदाज से दिखाई दे रहा है। उज़्बेकिस्तान की टीम में उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर दिखाई दे रही है। उम्दा सेटिंग, क्रॉस कोर्ट डायगोनल अटेम्प्ट और आसानी से पॉइंट जोड़ने में कामयाब रहे हैं श्रीलंकन खिलाड़ी। 3-2। ऑपोजिट पोजीशन से उम्दा स्मैश। फ्लैट सर्व। फिर चांस मिलेगा उज़्बेकिस्तान को और फिर इस मौके से भरपूर फायदा उठाया उज़्बेक टीम ने। जोंग 5G कावा मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय वीगोटेल, डे नंबर 3। उम्दा ब्लॉकिंग उज़्बेकिस्तान की टीम की और उसके बाद शानदार स्पाइक। सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है उज़्बेकिस्तान की टीम। मैच के इब्तदाई लम्हात से दबाव बरकरार रखा है उज़्बेकिस्तान की टीम ने श्रीलंका पर और वाज़े फ़र्क है दोनों टीम्स की एवरेज एज में। उज़्बेकिस्तान की एवरेज एज 22 साल है जबकि श्रीलंकन टीम की एवरेज एज 28 साल है। लेसर एज एंड बेटर एवरेज हाइट उज़्बेकिस्तान की टीम के पास। पांच 3 पर श्रीलंकन प्लेयर की इराटिक सर्व, बॉल बैक कोर्ट से बाहर। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है जब आप स्पाइक सर्व कर रहे हैं। द सेटिंग और अच्छा फिनिश किया श्रीलंकन मिडिल ब्लॉकर ने।
Zong 5G CAVA Men's Volleyball Championship powered by Vigotel. उज़्बेकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में एक एक मैच में कामयाबी मिली, एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में शरीक 6 टीम्स में से 2 टीम्स एलिमिनेट होंगी, 4 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए। खराब रिसेप्शन, लेकिन उसके बाद बेहतर सेटिंग थी और पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही श्रीलंकन टीम। हम बारहा इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि सेटिंग जो है वो स्पॉट ऑन होना ज़रूरी है। ये देखिए अच्छी सेटिंग थी, सिंगल ब्लॉकर को पेनिट्रेट करना था जिसमें कामयाबी मिली। बहुत उम्दा स्पाइक, कोई चांस नहीं था ब्लॉकर्स के पास इसको रोकने के लिए। स्पाइक की खास बात इसकी रफ्तार थी, बिल्कुल डेड खेले ऑन द फ्लोर, कोई चांस नहीं था। 8-5 के स्कोर पर उज़्बेकिस्तान की स्पाइक सर्व। ब्लॉकर्स की ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। नोमान, आपने मैच से पहले शॉट दिखाया था जो श्रीलंकन कप्तान हैं डिप्टी के। मैं समझता हूं कि ये इस टीम के मेन स्टे हैं, पोस्टर बॉय हैं, और वॉलीबॉल में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है यूनिवर्सल प्लेयर की, वो प्लेयर जो ऑल राउंड डिस्प्ले करे। तो डिप्टी इज़ वन फॉर श्रीलंका। थोड़ा सा ओवरवेट नज़र आए हैं, ही वॉज ऑल्सो ब्रीदिंग हैविली, मगर इस टीम की कारकर्दगी का मरकज़ और महवर जो है वो डिप्टी है। क़यादत भी कर रहे हैं हीरो शैन डिप्टी, जो क़यादत कर रहे हैं इस मैच में। और 8-7 की बढ़तरी उज़्बेकिस्तान को, मगर सर्विस श्रीलंका के पास है। हेड कोच पेट्रियस हैं श्रीलंका के। ये लॉब सर्व ऑपोजिट पोजीशन से स्मैश, मगर कोर्ट से बाहर। दूसरी जानिब उज़्बेकिस्तान के हेड कोच हैं बाबाय रमैन, कैप्टन हैं इस्लाम जोव। ये आप देख रहे हैं जो हेड कोच हैं पेट्रियस। पहले सेट का खेल, तीसरे दिन का पहला मैच, और श्रीलंका को 1 पॉइंट की लीड हासिल है। ये रिप्ले में देखिए, सर के पीछे से बहुत उम्दा ये सेटिंग की थी। ये कलाइयों का काम होता है सेटर का। सेटर दिमाग होता है किसी भी टीम का, वो तख्लीकी जहन रखता है, और डबल फिगर में पहुंचा श्रीलंका का। स्कोर 10-8 की बढ़तरी पहले सेट में, और यही सूरत हाल देखते हुए उज़्बेकिस्तान वी गो टेल टाइम आउट। टाइम आउट का अख्ताम हुआ। तजर्बे में श्रीलंका की टीम बहुत बेहतर है, मगर जो कल खेली है उज़्बेकिस्तान, उसके बाद बहुत एतमाद हासिल हुआ होगा। तशरीफ़ लाइए, लियाकत जिम्नेजियम आपका मुंतज़िर है, और 6 ममालिक की मेज़बानी पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत कर रहा है।
पाकिस्तानी इस लिहाज से मेज़बान है इस चैम्पियनशिप के। वाइट शर्ट्स में उज़्बेकिस्तान और दूसरी जानिब ब्लू में श्रीलंका। एवरेज हाइट 192 है उज़्बेकिस्तान की, जो कहीं ज़्यादा है श्रीलंका से, 186 है श्रीलंका के लिए। एवरेज एज श्रीलंका की 28 और उज़्बेकिस्तान की 22। 6 साल जूनियर है उज़्बेकिस्तान की टीम। और एक खिलाड़ी जो हम कल भी बार बार आपको दिखा चुके हैं, उनके जो लिबरो हैं किरदार, वो सिर्फ 17 साल के हैं। ये देखिए बैक रो अटैक, उसको बड़ी महारत से ब्लॉक कर दिया गया। 10-10 पे पहला सेट बराबर। अच्छा सिंगल ब्लॉक को पेनिट्रेट किया श्रीलंका ने। काफ़ी स्प्रिंग उनकी लेग्स में नज़र आ रहा है। दोनों टीमें जैसे नुमान आपको बता चुके हैं, एक मैच जीती हैं, एक हारी हैं, तो बहुत कुछ अभी उनके लिए इस टूर्नामेंट में बाकी है। वाहिद टीम जो अभी तक ना मैच हारी है ना कोई सेट कंसीव किया है, वो मेज़बान पाकिस्तान है। स्पाइक सर्व, बहुत उम्दा सर्विस, और उस सर्विस का कमज़ोर रिजल्ट नतीजा मिला और उसको फिनिश किया श्रीलंका ने। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो मॉडर्न वॉलीबॉल है उसमें स्पाइक सर्व जो है सबसे मेन लीथल वेपन होता है। बहुत उम्दा सर्विस। ये डिप्टी को आप देख रहे हैं। बारह 10 का स्कोर श्रीलंका के लिए। लॉब सर्व इस बार अंदाज बदला और चांस फिर श्रीलंका को मिलेगा। आउटसाइड हिटर की स्पाइक कमजोर थी और इस बार ब्लॉक होने के बाद बाहर चली गई। उज़्बेकिस्तान के लिए पॉइंट और सर्विस। नाज़रीन, पाकिस्तान के रेफरी शोएब मंशा सुपरवाइज कर रहे हैं। ये रिप्ले में देखिए, टच बॉल खिलाया था, डबल ब्लॉक से डिफ्लेक्ट होकर बाहर गया और ये स्पाइक सर्व लिबरो ने ली श्रीलंका के लिए आउटसाइड। ये हिटर ने अच्छा पॉइंट लिया अपनी टीम के लिए। नपातुला मिलिट्री मीडियम रेंज का शॉट था। श्रीलंका 2 पॉइंट की लीड लिए हुए 13-11। इब्तदाई लम्हात हैं, दोनों टीमें सेटल हो रही हैं, फील ऑफ द कोर्ट और नर्व सेटल कर रही हैं। अभी बहुत कुछ इस मैच में होना बाकी है। अच्छा दिफा लिबरो का और डबल ट्रिपल ब्लॉक। ये रिप्ले में आप देखेंगे, मॉडर्न टेक्निक है ट्रिपल ब्लॉक। ये देखिए, इसको आप बहुत उम्दा स्टफ ब्लॉक कहा जाता है। बिल्कुल डेड ब्लॉक कर दिया। मॉडर्न वॉलीबॉल में रूफ ब्लॉक भी कहा जाता है इसको। नोमान सुन रहे हैं आप? सुन भी रहे हैं, महसूस भी हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले भी तमाम तर ये जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, ख़ास तौर पे जो हिस्ट्री वॉलीबॉल की तमाम तर रैंकिंग्स और किस तरह वॉलीबॉल अपने इर्तकाई मराहिल से गुजरा, इसका पुराना नाम क्या था, ये तमाम तर चीज़ें हमारे सुनने वालों, देखने वालों इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इस इंफॉर्मेशन से उनकी भी मालूमात में इजाफा होता है। बहुत उम्दा एफर्ट, अच्छी सेटिंग थी, क्रॉस कोर्ट अटैम्प्ट और सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है श्रीलंकन टीम। 15-12। मैं जरा चेंज कर लूं सर। क्या कर रहे हो? चेयर नहीं ठहर, जो गेम खत्म हो जाए ना। मुझसे बैठा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, बहुत अच्छा, हाँ, इतनी डंडा uncomfortable लगा। एक दिन में हो गई। 3 दिन से तो बैठे। नहीं सर। श्रीलंका लीड लिए हुए 2 पॉइंट्स की, पहले सेट का खेल है। ये पैट्रियट्स को आप देख रहे हैं। मैंने कल मुख्तसर आपको बताया था कि यूनान के शहर ईथन से इनका ताल्लुक है। ईथन से 28 किलोमीटर पर ओलंपिया वाक़ है, जो जन्मभूमि है ओलंपिक्स की। बॉल क्रॉस हुई और बॉल बहुत उम्दगी से
ये आर्ट तो श्रीलंका के पास है, मुरलीधरन ऑफ स्पिन दिखाकर गुगली करने का, मगर इस बार कलाई की मदद से इस बॉल को ब्लॉकर के सर के ऊपर से आप देखिएगा बड़े दिलकश अंदाज में। पोजीशन दुरुस्त नहीं थी मगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम विद द कॉमन सेंस इज इट इज नॉट वेरी कॉमन। ओ यस, अच्छा स्पाइक। श्रीलंका अच्छा खेल रहा। मिनोज जो आप रेड शर्ट में देख रहे हैं ये लिब्रो हैं। लिब्रो वाहिद खिलाड़ी होता है जो टीम की यूनिफॉर्म से डिफरेंट कलर पहनता है और ये 2000 में मुतारफ़ कराया गया और इसका मकसद ये होता है, इसको कहते हैं डिफेंडर ऑफ द फ्लोर, फर्श का मुहाफिज, क्योंकि इसके काम की नौयत ये है कि इसने चारों कोनों में जाकर बॉल उठाना होता है। बहुत उम्दा, ठीक ठीक निशाने पर लैंड करती हुई श्रीलंका की टीम। कोच भी बहुत खुश हैं एंड व्हाई नॉट। पैट्रियस को आपने देखा, वी गो टेल टाइम आउट। खुश आमदीद। ये श्रीलंका की टीम आप कैमरे के करीब देख रहे हैं और सामने वाइट्स में उज़्बेकिस्तान, और ऑफिशियल टेबल को भी आप देख रहे हैं मोहम्मद शामीरी। और ये पिंक कलर का फुटबॉल है। आप सोचते होंगे कि पिंक कलर क्यों है, वजह यह है कि सबसे ज़्यादा विजिबल कलर यही होता है। तो ये शामीरी को आप देख रहे हैं, मोहम्मद शामीरी, ये हेड डेलीगेट हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। 17-14। ओ यस, अच्छा मैंने पिंक कह दिया, येलो कलर का बॉल है। थैंक यू फॉर करेक्शन। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये आप देखिए 17-15। लॉब सर्व, बैक रो अटैक और अच्छा दिफा, कमजोर, मगर फिर उज़्बेकिस्तान को मौका मिलेगा। बॉल प्लेस कर दी। ये पिछले 3 मिनट में दूसरी बार हमने देखा है। और टेक्निकली जैसे मैंने कहा कि स्किल के लिहाज से बेहतर टीम है। ये रिप्ले में आप देखेंगे, डबल ब्लॉक को पेनिट्रेट करने के बजाय फिल इन द ब्लैंक्स को तरजीह दी। करीब आ गया उज़्बेकिस्तान। 16-17। लॉब सर्व, क्विक एक्शन अटैक नाकाम हुआ। बॉल प्लेस करने की कोशिश, लिब्रो ने सेटिंग की। दोबारा चांस मिलेगा उज़्बेकिस्तान को, तीसरी बार चांस मिलेगा और इस बार कामयाब हुए। उम्दा रैली देखने को मिली इन दोनों टीम्स के दरमियान, 17 ईच। क्वालिटी ऑफ वॉलीबॉल इज जोंग 5G मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय वीगोटेल में बहुत जबरदस्त रहा है राइट फ्रॉम डे 1। सवाए पाकिस्तान की टीम के तमाम तर मैचेस जो हैं वो 5 सेट में गए और इस मैच में भी कोई ऐसा ही लग रहा है कि आसान विक्ट्री किसी भी टीम को नहीं मिलेगी। अच्छी सेटिंग और उसके बाद ऑपोजिट पोजीशन से अच्छा स्मैश स्पाइकर का। दोनों टीम्स एक दूसरे के फुट स्टेप्स फॉलो कर रही हैं। पहले श्रीलंका लीड लेता है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान कम बैक करता है। ये देखिए अच्छी सेटिंग थी, उसके बाद ऑपोजिट पोजीशन से उम्दा स्पाइक। उज़्बेकिस्तान की टीम ने कल एक बहुत बड़ा अपसेट किया जब अपने से कई बड़ी कजाकिस्तान की टीम के खिलाफ एक 5 सेटर ना सिर्फ खेला बल्कि उस 5 सेटर में कामयाबी भी हासिल की। सिंगल ब्लॉक की कोशिश, उसमें कामयाब रहे श्रीलंकन खिलाड़ी। क्या हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ये जो कावा के पॉइंट्स हैं, ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग है टीमों की, उसमें काउंट होते हैं।
तो हर टीम के लिए बड़ा अच्छा मौका है अपनी एशियाई और आलमी रैंकिंग को बेहतर बनाने का। और पाकिस्तान के लिए इस सर्विस के बाद बात करते हैं। कमज़ोर शॉट थी मगर एंगल बड़ा अच्छा था। सर्विस और पॉइंट हासिल किया उज़्बेकिस्तान ने। नाज़रीन, एशियन गेम्स की जो वॉलीबॉल की जो पूल्स हैं वो अनाउंस हुए हैं। तो पाकिस्तान के पूल में जापान के अलावा उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की टीमें भी शामिल हैं। जो नगोया जापान में होगा तो पाकिस्तान के लिए आइडियल मौका है इन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भांपने का। एंड सेम इज़ द केस विद उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो दो ये अमली तौर पर एक प्रैक्टिसिंग सेशन है दोनों तीनों टीमों के लिए एक दूसरे को भांपने का। और जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एनालिस्ट जो हैं वो भी अपना काम बगौर कर रहे हैं। श्रीलंका आगाज से ही सेट में लीड लिए हुए है 20-18 से आगे। लॉब सर्व, क्विक एक्शन अटैक, 19-20। मैच भी 19-20 है, स्कोर भी 19-20 है। जिंदगी नाम ही 19-20 होने का सर। टॉल लैंकी फिगर नंबर 1 उज़्बेकिस्तान के। बहुत अच्छा ब्लॉक दोनों टीमों की जानिब से। यक के बाद दीगरे 2 बार ब्लॉक हुए। चांस है अब श्रीलंका के लिए और डिफ्लेक्ट होने के बाद बॉल बाहर गई। कोच सेकंड रेफरी से कह रहे हैं कि बॉल पांव से टकराने के बाद बाहर गई है। हम रीप्ले दिखाएंगे तो उसमें वाजे हो सकेगा। ये मंशा से बातचीत कर रहे हैं। और आलमी सतह पे नोमान अब वॉलीबॉल में भी रेफरल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, ये डिफ्लेक्ट हुआ और ये फिर पांव से टकराते हुए बहुत करीबी मामला है। अब मंशा ने अपना फैसला रिवर्स किया है। देखें, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की अहमियत वाजे होती है। या टेलीविजन स्क्रीन पे हमने वाजे तौर पे देखा कि बॉल डेड ब्लॉक होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी के पांव से छूने के बाद बाहर गई। तो मंशा ने अपना फैसला चेंज किया और उनकी मावनत की है बिजॉय ने, ये जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेपाल से। टाइम आउट, वीगो टेल टाइम आउट। शेर भी न पड़ा। खुश आमदीद। अब स्कोर बराबर हो गया है 20-20। उज़्बेकिस्तान ने कम बैक किया है। ओ मॉन्स्टर स्पाइक, ऑपोजिट पोजीशन से खेले हैं उज़्बेकिस्तान के स्पाइकर। ये रिप्ले में देखिए, उम्दा सेटिंग थी। 2 ब्लॉकर्स से बचाते हुए सेंटर ऑफ द कोर्ट खेले हैं और पहले सेट में पहली बार लीड ली है उज़्बेकिस्तान ने 21-20 पर। लॉब सर्व, ब्लॉक, उम्दा ब्लॉक, लीड 2 पॉइंट बढ़ा ली और बड़े क्रूशियल लम्हात पे लीड ली है। कल जो नोमान जो स्पाइक सर्व का लेवल था अभी तक वो हमने नहीं देखा। फौरी तौर पे श्रीलंका के कोच ने टाइम आउट लिया है। वीगो टेल टाइम आउट।
यहाँ चाइनीज में ये एशियन ऑक्शन। अच्छा एशियन हो। हाँ, तो वो आपको पसंद है वो चाइनीज? तो फिर वो मैं 7 बजे लेटा तो रात 12 बजे। वीगो टेल टाइम आउट से एक मरतबा फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अच्छी सपोर्ट मौजूद है श्रीलंका की और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। ना सिर्फ श्रीलंका बल्कि नेपाल, बांग्लादेश जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनके अच्छी तादाद में जो फैंस हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। चांस है, बॉल क्रॉस होगी, श्रीलंका के लिए अब चांस है। बहुत उम्दा क्विक एक्शन अटैक, और कौन हो सकता है? कैप्टन इनिंग हम कहते हैं, डिपति जो क़यादत कर रहे हैं। और नुमान आप बात कर रहे हैं न सिर्फ ये कि सपोर्टर्स, आप जानते हैं श्रीलंका तो एक बड़ी स्पोर्ट लविंग कंट्री है। उनकी मैंने कल आपको बताया कि वुमेन स्पोर्ट्स में एशिया में लीड कर रहे हैं वो। उसके अलावा जो शरअ तालीम है श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है, और इन ममालिक के एम्बेसडर्स, हिज एक्सीलेंसीज भी यहाँ मौजूद रहे हैं। बहुत उम्दा सर्विस, जितनी तारीफ की जाए कम है। और आइसिंग ऑन द केक, नोबडी एल्स बट डिपटी। 22-22 बराबर, और ये है एज सर्विस का मौजज़ा। जी हाँ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। ये देखिए, अब अच्छा सर्व बहुत उम्दा थी और उसके बाद ख़राब रिसेप्शन के बायस ये पॉइंट जो है वो मिला है श्रीलंकन टीम को। क्विक एक्शन अटैक फ्रॉम श्रीलंका, और 22-22 से ये पहला सेट बराबर। बॉल बैक कोर्ट से बाहर, खराब सर्व श्रीलंकन टीम की। 23-22। श्रीलंका ने लिब्रो इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लिया गया था। बहुत मुस्तैद लिब्रो हैं दोनों। ख़ास तौर पे श्रीलंका के जो लिब्रो हैं वो बिल्कुल जैसे वो तुर्की के वेट लिफ्टर थे नईम सुलेमान ओगलू, उनको पॉकेट हरकुलीस कहा जाता था, तो उसी अंदाज के हैं। बड़े क्रूशल लम्हात पर 23-23 से बराबर। पहले श्रीलंका ने 20 पॉइंट्स तक लीड ली, फिर उज़्बेकिस्तान ने बराबर किया, 2 पॉइंट की लीड ली, और अब फिर श्रीलंका बैक विद अ बैंग, 23-23 से बराबर। कैप्टन श्रीलंका की जानिब से सर्विस करेंगे डिपति। ये उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी को एक्सप्लेन कर रहे हैं मंशा कि किस तरह उन्होंने बॉल को होल्ड किया था, अपनी जगह पे वापस चले गए हैं, काम कूल रहने के लिए कह रहे हैं। लॉब सर्व, बहुत अच्छा दिफा, दूसरे एंगल से ड्रॉप। उज़्बेकिस्तान सेट पॉइंट पर। बहुत क्रूशल लम्हात हैं। ये रिप्ले देखिए, ये ड्रॉप कर दिया ब्लॉकर के हाथों के ऊपर से। ये स्मैश रीच की वजह से कर सके। सेट पॉइंट उज़्बेकिस्तान। लॉब सर्व, ड्रॉप करने की नाकाम कोशिश श्रीलंका की, लिब्रो ने उठा लिया। श्रीलंका के लिए चांस है, मगर उससे पहले मंशा की विसल के 4 टच हो गए थे। इस तरह 23 के मुकाबले में 25 के स्कोर से उज़्बेकिस्तान ने पहला सेट, एक बड़ा रोलर कोस्टर सेट, अप एंड डाउन स्कोर जाता हुआ जीतने में कामयाब हुई उज़्बेकिस्तान की टीम।
So we're back with the second set between Uzbekistan and Sri Lanka. Uzbekistan winning the first set 25-23. So start off the proceedings. In the second set will be Hedarov serving for Uzbekistan. Handled by Tusara. Oh well, they went out of system completely. This drop, Muhammadiyah from Uzbekistan. Another kill against his name. Wow, what a start. Large area left unguarded, and Muhammadiyah making the most of it. Brilliant start to the second set. They draw the first blood, serve goes long. How they're all very ambitious, so it couldn't tag the line this time. Missed it by some distance. 1-all. Sandeepa serving for Sri Lanka. Brilliant serve, nicely handled by Hedarov. Oh wow, made a mess of it. Hakimov had a very good opportunity and absolutely miscued it. Not smart, a clever play at all from Uzbekistan. Sri Lanka serving. Sandeepa serving for Sri Lanka. That was a very fine serve. Well, this caused the overpass. Kill comes from Tarusha. Sri Lankan Tarusha number 5. He absolutely murdered it. And just watch this in slow motion. Well, force the error and off the edge of the block goes out of play. Brilliant start for Sri Lanka in this second set. 3-1, they're leading. Sandeepa still on serve. Not picked up Muhammadiyah. And he is blocked, but block goes out of bounds. Brilliant effort, but it didn't quite pay off. So Kimov is not going to serve for Uzbekistan. Now it's in the slow motion. 2 blockers. But off the hands of blockers, it went out. Oh, it goes long. Disappointing serve from Hakimov. Uzbekistan. Hakimov right away is replaced. 4-2. Sri Lanka leading and serving. And it's going to be Vasanta. Handled by Hedarov down the right hand side. Sabirov, it had to be. Sabirov, the most dynamic of the spikers for Uzbekistan. High hands block out for Uzbekistan. He's on serve, and you can see on your TV screen what a player he is. Well, mishandling, that had put them out of system. Now they've got a free ball, Uzbekistan. Oh, tried to tip it over. The net didn't quite work. Tusara blocked, he will have another chance. Another very good pick-up, Hedarov. And Muhammadiyah tried to shove it across, couldn't find a vacant space. Cross the line, good pick-up at the premises from Hedarov. Another opportunity. Oh, great finish. Magnificent spike. Tarusha got the third and fourth opportunity. And eventually he was able to come up with a very good kill. Tarusha from Sri Lanka. He makes it 5-3. Watch it in slow motion. Very good setting. Down the line spike. Powerfully struck. That was a scud missile. Nicely handled. Muhammadiyah down the left-hand side with yet another kill. He is playing brilliantly. Muhammadiyah. Sabirov and Hedarov, there are these 2 other men players, but the way Muhammadiyah chipping in. This is something bonus for Uzbekistan, and he's on serve. Brilliant, brilliant play from Muhammadiyah. Oh, jump serve goes into the net.
must be very disappointed with his effort. Mohammad Diab, we're playing brilliantly. The captain on your TV screen, Sabirov, the captain. To Sara serving now for Sri Lanka. They're ahead by 6-4. So this 2-point lead is still intact for Sri Lanka. To Shara, tosses the ball high, jumps in the air, and he also goes into the net. Returns the favour right away, Sri Lankan server. So a change has been made. A libero called off, Boriev libero called off, Akimov being reintroduced. And so to serve it will be Khrushchev for Uzbekistan. Oh, this serve also goes into the net. Very, very disappointing to see too many serves are going into the net. So Ayush from Sri Lanka serving, number 3 Ayush. And the ball is not handled by Mohammad Dia. Finish comes from Hadarov. As I mentioned earlier, he is the man to watch out for. And that was a sensational kill. And now watch him in the replay. Defeated 2 blockers, creating a very, very good angle. So Mardov serves, sets it back, and Jagan this time managed to have it block out. It was blocked out by Jagan. He contributes as well. Just watch this. Was offered a free net. Almost free net offered to Jagan. And oh, Sabirov, it's a moon ball, sky ball. Can they handle it? Oh, went out of system. Down the left-hand side, brilliant block touch, nicely picked up. Sabirov, magnificent yet again. Very smart play, Sabirov. Looked slightly out of position, out of alignment. Slightly Sabirov, but the way he put this away, magnificent. Would you believe this? Dead accurate. Finest play I wanted. So, Adrov now serving, and off the tip of the net. Well, great save, great pickup. Hadarov this time. He is the man responsible for this point. Picking up just millimeters above the floor. Mughal Steel replay, and what a great replay this is. Credit for this point must be given Tadarov, who pulled off almost an almost impossible save. Great play, making it 8-all. Uzbekistan now at level terms, and Hadarov serving. Oh, he goes long with his serve. Disappointed Hadarov. 9-8 Sri Lanka. Now just 1 point is separating these two. So Uzbekistan coming back into this set. 9-8 Sandeep on serve. Nice jump, so handled by Hadarov again, and all was an overpass. Mohammad Diab, no one is going to pick this block touch. Oh, wow, well, very, very smart play, and that was so explosive. Now watch this in the slow motion. The ball was set perfectly for Mohammad Diab. Block touch, desperate, they're desperately diving to save the ball, but that was not really retrievable from that position. Handled by Tisara. And now they've got a chance down the right-hand side. Is pushed across the net by Sabirov. It went for a drop to Sara. And, oh, well, what a still alive. Would you believe this? Rally continues. Now their opportunity and a finish. Wow, tremendous play. And it was Khrushchev. For the first time we're seeing him in action. And this is what he is capable of.
wrong, very long rally. It just continued, and things were finished in this fashion. Khrushchev contributes in this way on the pipe. Great defense, and ball. Oh, well, confusion. Lack of understanding costed a point. Sobirov and Moradov going for the same ball at the same time. That caused the confusion, and they lost it just for these two getting together to bump the ball across. Made a mess of it at the end. When this happens, served by Visanta down the right hand side, and again it's Sobirov. Sobirov. Well, what a great spike this was. Absolutely thunderous drive. And Sobirov is the player. This top player. Sobirov and Heatherov, these are two top players. Handled by Sandeepa, blocked. This side was Khrushchev. Very, very solid blocker. Great ball of China. Khrushchev on this occasion. He absolutely shut down the spiker. Right, this in the slow motion. Oh, serve from the captain. Sobirov goes long. They're so good when it comes to blocking. Uzbekistan. This is from Uzbekistan captain. But you probably limit too much on it. Not enough topspin to land inside. So Jagan serving. Oh, he also goes long. Jagan from Sri Lanka. It's the ball too hard, a little too hard. So Mohammadiev is going to serve for Uzbekistan. Decided to head by 13-11. Handled by Sandeepa. Malaysian sets the ball for Jagan, and great defense. Ball is sent across. Now Sri Lanka will have another go at this. This time he penetrates to Sora down the left-hand side. But excellent kill. Great swing to Sora. Cross-court finish. Magnificent to Sora on this occasion. Uzbekistan coach not really impressed with the effort of his blockers. He wanted them to stretch across over the net, but they were more keen on containing block. So this is where their coach is not really that much impressed. So Heatherov just shoves the ball across. Couldn't find the vacant space. Absolutely stuffed block. Heatherov was the blocker on this occasion. And no one covering the spike at Sri Lanka. Vacant space in the backcourt. Just watch this in the replay. No coverage available this time. Khrushchev for Uzbekistan on serve. Handled by Sandeepa on the pipe. Yet another block. Chisara this time blocked. And that block landed in the backcourt as well. Again, no one covering. So two back-to-back monster blocks from Uzbekistan. With this time for Vigotel timeout. So Vigotel timeout comes to its end. And now Uzbekistan are ahead by 3. Initially Sri Lanka was looking very, very impressive, but Uzbekistan have come back so very strongly. And now they are leading by 3 points. 15-12, Uzbekistan. And to serve for Uzbekistan after this timeout, this Vigotel timeout, is going to be Khrushchev.
Restrict off serving for Uzbekistan. This side is leading by 1-0 and 15-12 in the second set. Oh, great spike! This time, Sandeepa contributing. Magnificent cross-court kill from outside hitter position. Watch this in the slow motion. Goes over the hands of the blocker. Oh, well, that was terrific play. Wins the serve back for his side. And Aish going to serve for Sri Lanka. Handled by Mohammad Diaf. And Sabira put too much on it. Generally, he is dead accurate, but on this occasion, a sensible long, well out of play. Making it 14-15. Now just watch this. Sabira with a very good opportunity back row, but he goes long. Must be very disappointed with his efforts. So he's still on serve for Uzbekistan. Heatherov, very good block touch. And another goes some confusion. They recovered and just rolls the ball across Sabirov, but very disappointing play. Another point goes to Sri Lanka. Well, some confusion, some real confusion in Uzbekistan camp. And now score is level at 15-all. Vigotel timeout. So Vigotel timeout concludes. And we are going to restart the second set. Sri Lanka are coming back into the second set once they were trailing by 3. And now they are able to make it 15-all. So very good effort. Aish from Sri Lanka still on serve. 3 consecutive points for Sri Lanka. Very good contest in the second set. Tight battle, good for the spectators. Aish, the serve handled by Mohammad Diaf down the right hand side. Sabirov wins 1 point for his side in stunning fashion. That was a ripper. If we can watch this in the slow motion. Just watch him. Sabirov back row attack, goes cross court. And the defender at the back line couldn't do much with this. Channel by to Sara. And terrific, magnificent strike from Sandeepa. A cross court kill. Absolutely marvelous. Now watch this in slow motion, solitary blocker, and it went around him so very easily, just turning the wrist away. Marvelous play from Sri Lankan spiker. It's ball handled by Mohammad Diaf Hakimov. It was Hakimov who had a put away and pushed his way into the backcourt. Magnificent play from Akimov on this occasion. Rarely you would see, but this time it was just brilliant. 17, 16. Oh, he goes into the net. Heatherov. Wow. So 17-all. Sri Lanka serving, and it will be Sandeepa to serve for Sri Lanka. Handled by Buriev. Oh, well, that was badly mistimed spike from Sabirov. Generally is good, but he was too early into this spike. The ball was little too high for him. So he ended up setting the ball long. Sabirov on your 2 screen there, captain
Not happy, not impressed. His effort and rightly to Sandy Pistol on serve, handled by Boriev. The ball is set down the left hand side for Mohammad Dia. Oh, he's blocked. No one covering. Well, that was a rock solid block from Sri Lanka. 1917, Sri Lankans are back in front. Sri Lankans are leading. So we go to timeout. So we go till timeout ends. And now Sri Lankans are in front, back in front. 1917. They are leading. And Sandeepa still serving. Sandeepa for Sri Lankan serve. Tosses the ball high. And a very good serve handled by Heatherov. And the keeper blocked. They will have another go down the right hand side. Not a bad block touch, but still it goes out of play. So they made a valiant effort, didn't quite work on this occasion. Managed to block the ball out of Vasanta. So came up. So they are very, very poor handling. He absolutely muffed it. Manoj is the libero, Sri Lankan libero. Well, it was lapse of concentration reward, but it has cost him a point. He's watched him in action. No, what really happened? Had some top spin on it. Oh, ball down the left-hand side. Dilshan to Rusha Dilshan managed to find the edge of the block, and then it went out of play. Rusha Dilshan, another valuable player for Sri Lanka. So Vasanta now is serving. And his side is ahead by 1 point. 2019 they're leading. Vasanta serve handled by Heatherov down the right side. Sabirov. And he also managed to block it out. Cross-court kill from Sabirov. Sabirov, magnificent player. He is such a powerful striker and with a very high arm speed. Oh, handled by Benoit this time. Down the right inside. Jagan is blocked by Mohammad Dia from Uzbekistan. Well, another example of great ball of China. Now watch him in a slow motion. Boy, just look at his technique. Stretching his hands across over the net. And they absolutely shut him down. Oh, Sabirov goes into the net. Not happy with himself, Sabirov, the captain. Making it 21 all. Very tight battle in the second set. No one knows who is going to take this. No one is willing to give in. No one is willing to give up. A very interesting battle on hands. So Jagan is serving for Sri Lanka. Tosses the ball high. Jump side. Says, oh, it's overpass. Will be a kill. For sure. Well, poor ball handling caused this kill from Sri Lanka. Magnificent play. Very, very powerful serve. That forced the error. It now just wanted to serve. Well, Heatherov not able to handle that serve cleanly. And that cost him a point. So Jagan's still on serve. He's aiming for the seam, I reckon. Nicely handled this time by Mohammad Diab. Sabirov blocked. Now they have recycled ball down the left side. Mohammad Diab looking for a replacement. And the ball was blocked. Well, execution wasn't quite perfect. He wanted to loop it over the hands of the blockers. Ended up crashing into them. And he was blocked so very easily.
Now watch this in the replay. Off speed, went for the placement, looking to roll it over the hands, loop it over the hands of the blockers. Not succeeding this time, handled by Heather. This time, Dia for the swing. He also goes long. Very disappointing from Uzbekistan standpoint. Far too many unforced errors. Set point, Sri Lanka. Very good opportunity to make it 1-0. And Jagan still on serve. Jagan for Sri Lanka. Set point, 24-21. Oh, goes into the net. Still 2 more set points for Sri Lanka. So substitution being made for Uzbekistan. Ori Budanov is being introduced. So Mama Yusuf on Sarai. He goes into the net. Set goes to Sri Lanka. They must be very happy with themselves, Sri Lankans. We saw a bit of seesaw battle in this second set. Initially, Sri Lankans were ahead, and then Uzbekistan came back, and then Sri Lankans took over. And I watched this in the slow motion. I'll put highlights of the second set. Tremendous play from Uzbekistan as well, but there were far too many enforced errors from their top players. Sobirov was blocked on quite a few occasions, and he ended up hitting the ball long as well. And then at the end, Mama Yusufov goes straight into the net, making it. So now it is equal start scoreline, set score 25-22. Sri Lanka winning a set back, making it 1-0. And with this, we are taking a very short break. We'll come back with a third set.
खुश आमदीद मोहम्मद तौफीक, नौमान चौधरी, टीपीटी प्रोडक्शन टीम के हमरा खुश आमदीद। और तीसरे सेट का आगाज़ 1-1 सेट से बराबर। दूसरे सेट में बड़ा अच्छा कमबैक श्रीलंका ने। और नौमान, जो स्ट्रेंथ इस चैम्पियनशिप में रही है उज़्बेकिस्तान की स्पाइक सर्व, हैरत अंगेज़ तौर पर जब 20 ईच होता है दूसरे सेट में तो वो ऑफ कलर हो जाते हैं उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी और स्पाइक सर्व करता है श्रीलंका। तजर्बे को ब्रूए कार लाते हुए 28 साल एवरेज एज है श्रीलंका की, 22 है उज़्बेकिस्तान की, तो तजर्बे की बदौलत दूसरा सेट जीते हैं। तो तीसरे सेट का आगाज़ हुआ है और 1-1 स्कोर है। श्रीलंका बड़ी उम्दा दूसरे सेट में फाइट बैक उनकी। ये स्पाइक सर्व बैककोर्ट से बाहर गई। खेल का मैदान किरदार साजी करता है कौमों की, और वो जो कहा जाता है कि अगर आप कौन सी कौम कितनी तहजीब याफ्ता है, इस रैली के बाद बात करते हैं। क्विक एक्शन अटैक, बहुत उम्दा। डेपति ने बहुत अच्छा वॉलीबॉल ब्रेन है। जब उन्होंने देखा कि वो प्रॉपरली प्लेस नहीं है तो उन्होंने बॉल को धीरे से, बिल्कुल आहिस्तगी से, सिल्क टच, डेपति आज बाहर हैं और उनकी जगह बहुत उम्दा ड्रॉप लगाया है और कमाल ड्रॉप खेले हैं श्रीलंका की जानिब से। हाजिर दिमागी का खेल, एक और कमजोर रिटर्न, बॉल क्रॉस हुई, फिर चांस मिलेगा और अच्छा ब्लॉक। उज़्बेकिस्तान 3-2 की लीड। श्रीलंका की एशिया में रैंकिंग 17th है। ये रिप्ले में देखिए, ये हैं जी 18 नंबर की जर्सी में। उम्दा लॉब सर्व, ओ बॉडी ब्लो लिया मगर बॉल एक्शन में रखा। इस बार धीरे से महज बॉल को प्लेस किया। फास्ट पेस पे तीसरे सेट का आगाज हुआ है। तारीफ बनती है श्रीलंकन टीम की, जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने कमबैक किया दूसरे सेट में। अगरचे पहले सेट में भी 20 पॉइंट्स तक दोनों टीम्स बराबर थीं, 20 पॉइंट के बाद आखिर में बर्तरी जमाई उज़्बेकिस्तान की टीम ने, और दूसरे सेट में भी 20-20 पॉइंट्स तक दोनों टीमें हम पल्ला रहीं। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि कितनी कॉम्पिटिटिव वॉलीबॉल हमें देखने को मिल रही है कावा चैंपियनशिप में। चार 3 उज़्बेकिस्तान की टीम 1 पॉइंट आगे है, लेकिन श्रीलंका से आप कमबैक की तवक्को रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बॉडी ब्लो लिब्रो ने लिया, अच्छी एफर्ट दोनों जानिब से, क्वालिटी वॉलीबॉल ऑन डिस्प्ले, शानदार ब्लॉकिंग श्रीलंका की। फिर चांस मिलेगा उज़्बेकिस्तान को। बहुत उम्दा बॉडी ब्लो, शानदार एफर्ट। संदीपा जर्सी नंबर 13, कोई चांस नहीं दिया उन्होंने लिब्रो को, ब्रूट फोर्स ऑन ऑफर। मिडिल ब्लॉकर 13 नंबर की जर्सी में श्रीलंका के लिए। 4 ईच इन द थर्ड सेट। जर्सी नंबर 5 थरूशा, लॉब सर्व, बहुत उम्दा बैक रो अटैक, सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही उज़्बेकिस्तान की टीम। जिस तरह दोनों टीम्स खेल रही हैं तौफीक साहब, हालात, वाकयात और कराइन बता रहे हैं कि वी आर हेडिंग इनटू अनदर 5 सेटर। नाज़रीन, जितनी बार भी नोमान ने ये बात की है, बदकिस्मती से सच साबित हुई है। बहरहाल श्रीलंका की टीम बेहतर खेल रही है, उसने पेस को डिक्टेट किया है। वो जो फास्ट पेस जो
उज़्बेकिस्तान खेलती है उस पर नहीं खेलने दिया, अपनी टर्म्स पे खेलें। 5 ईच। खास तौर पे दूसरा सेट तो बहुत अच्छा खेली है श्रीलंका। तजर्बे की मदद से, और ये रिप्ले आप देखिए जिस तरह डमी जंप और बैक रो अटैक, इसको पाइप अटैक भी कहते हैं, टेम्पो अटैक भी कहते हैं। ये मॉडर्न वॉलीबॉल की इस्तेलाहात हैं जो नेशंस वर्ल्ड लीग में इस्तेमाल हो रही हैं। ये बैक रो अटैक इस बार उज़्बेकिस्तान की तरफ से। जब अटैक एरिया की लाइन जो 5 फीट की होती है उसके पीछे से खिलाड़ी अटैक करता है तो उसको बैक रो अटैक कहा जाता है। 6-5 तीसरा दिन और 7वां मैच, आज के दिन का पहला मैच। बैक रो अटैक, नेट क्रॉस नहीं किया, नेट से डिफ्लेक्ट होकर बॉल वापस आ गई थी। मंशा ने फौरन उसको देख लिया था। ये देखिए, ये नेट से बॉल डिफ्लेक्ट होकर वापस आई। उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी हल्का सा एहतजाज कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि बॉल डिफ्लेक्ट होकर गई है। मंशा का ख्याल उससे मुख्तलिफ है। अभी आपको हमने एक शॉट दिखाया था, 96 इयर्स ओल्ड वॉलीबॉल फैन वीआईपी लाउंज में बैठे हुए थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ही इज मूविंग आउट ऑफ द कोर्ट। उज़्बेकिस्तान 8, श्रीलंका 6। ये जिस बुजुर्ग की हम बात कर रहे थे, उम्दा, स्किल लेवल बेहतर है, मॉडर्न वॉलीबॉल खेलती है। जब हम मॉडर्न वॉलीबॉल कहते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि जो जदीद तर्ज है वॉलीबॉल का, जिसमें स्पाइक सर्व है, ट्रिपल ब्लॉक है और टाइम आउट लिया गया, वीगोटेल टाइम आउट। वेलकम बैक। ये एक खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं लॉन्ग रेंज कैमरा से लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद का, और ये एशिया, सेंट्रल एशिया का बेहतरीन टैलेंट डिस्प्ले है। और ये आप नसीर अहमद को देख रहे हैं, डायरेक्टर टेक्निकल हैं इस चैम्पियनशिप के, उनके साथ मोहम्मद शामीरी। बहुत उम्दा बैक रो अटैक, श्रीलंका की जानिब से अच्छा स्पाइक, मॉन्स्टर स्पाइक तो नहीं कह सकते मगर बड़ा नपा तुला और अच्छे जाविया पे खेला गया। 7-9 पे सर्विस की तैयारी श्रीलंका की जानिब से, लॉब सर्व, बहुत, ये है मॉन्स्टर स्पाइक जिसको बहुत महारत से खेले हैं। कद का एडवांटेज हम नाजरीन, 186 सेंटीमीटर हाइट है एवरेज श्रीलंका की और 192 सेंटीमीटर हाइट है उज़्बेकिस्तान की, तो इस शोबे में उज़्बेकिस्तान को बढ़तरी हासिल है। ये
लिब्रो को बाहर बुलाया गया है उज़्बेकिस्तान की तरफ से। वाहिद खिलाड़ी होता है जिसको बाहर बुलाने के लिए गेम रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बार सिंगल ब्लॉक को पेनिट्रेट किया। डबल फिगर्स में उज़्बेकिस्तान है 10 और उनके ताकुब में है श्रीलंका 8। तीसरे सेट का खेल है। उम्दा सेटिंग और उससे भी ज़बरदस्त ब्लॉकिंग श्रीलंका की, लेकिन बॉल डेविएट होकर साइड कोर्ट से बाहर गया। जोंग 5G मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय वीगोटेल। अच्छे खेल का मुजाहरा किया आज भी उज़्बेकिस्तान ने। कल काज़ाकिस्तान के खिलाफ 5 सेटर खेला, उसमें उन्हें कामयाबी मिली। आज वो अपने से कदरे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट ना सिर्फ उम्दा खेल रही है बल्कि लीड भी कर रही है तीसरे सेट को। शानदार स्पाइक सर्व, बॉल क्रॉस होगी, चांस मिलेगा उज़्बेकिस्तान को। बहुत जबरदस्त ब्लॉकिंग श्रीलंका की। डबल ब्लॉक ऑन ऑफर था और भरपूर अंदाज से दोनों ब्लॉकर्स ने मेक श्योर किया कि डेड ब्लॉक करें, वो बॉल को हरगिज क्रॉस नहीं होने दिया। काफी बेहतर खेल पेश किया है श्रीलंका ने। अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 3 स्ट्रेट सेट से शिकस्त हुई। कल नेपाल के अगेंस्ट भी वो बहुत करीबी मार्जिन से बचे शिकस्त से, या 10-10 से 5 सेटर बराबर था। और उसके बाद आखिर में उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर बेहतर खेल पेश किया और कामयाबी हासिल की। हार्ड फाउट मैचेस चल रहे हैं और यही खासा रहा है इस कावा चैंपियनशिप का कि किसी भी टीम के लिए आसान फतह या बिल्कुल आसान गेट अवे नहीं रहा। पहली स्पाइक ब्लॉक हुई, दूसरी पेनिट्रेट करने में श्रीलंका कामयाब। तुषारा 5 नंबर की जर्सी में पॉइंट और सर्विस श्रीलंका के लिए। और दिलचस्प बात है, बहुत कम देखने को मिलता है। अब लिब्रो चेंज किया है, लिब्रो से लिब्रो को चेंज किया है श्रीलंका ने। सूडा आए हैं 1 नंबर की जर्सी में। सबसे कम कद के खिलाड़ी हैं इस पूरी चैंपियनशिप के लिए। रेड शर्ट में श्रीलंका के सूडा, वो बहुत उम्दा स्पाइक सर्व और लिब्रो ने अच्छी ली उसको और जवाबी हमला सूडा का इस्तकबाल किया। और सूडा ने हाथ डाला था मगर ले नहीं पाए और एक ही पॉइंट के लिए सूडा को लाया गया, वापस बुला लिया गया। और अब दूसरे जो लिब्रो हैं वो मुतारफ कराए गए हैं। ये देखिए सूडा को अब आप देखेंगे, ये उनके हाथों से डिफ्लेक्ट होकर बॉल बाहर गई। 13-10 के स्कोर पर चांस है श्रीलंका के पास। टच बॉल करवाने की कोशिश थी जिसमें कामयाब नहीं हो पाए। 4 पॉइंट्स आगे है अब उज़्बेकिस्तान की टीम। यहां से मेक श्योर करना होगा उज़्बेक टीम को कि श्रीलंका को कमबैक का मौका ना दें। वीगोटेल टाइम आउट। वेलकम बैक। कोचेस अपना तमाम तर तजर्बा मुशाहिदा मुंतकिल कर रहे हैं। क्रंच लम्हात हैं, दोनों टीमें इवन स्टीवन हैं, 1-1 सेट जीत चुकी हैं। और जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक मैच जीती है, एक मैच हारी है श्रीलंका, और यही सिचुएशन रही है उज़्बेकिस्तान के लिए। उज़्बेकिस्तान 14-10 पे सर्विस की तैयारी में। लॉब सर्व, लिब्रो ने ली, बॉल प्लेस करने की कोशिश
नेट से टकरा गए थे। सेकंड रेफरी की विसल बज चुकी थी बिजॉय की, और ये देखिए तीन नंबर की जर्सी में श्रीलंका के लिए 11-14 पे सर्विस। डबल ब्लॉक होने के बाद बॉल बाहर चली गई। 15-11। उज़्बेकिस्तान मुझे 2 मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। और जैसे मैंने बताया कि ताशकंद, समरकंद, बुखारा इसके सबसे खीवा बहुत खूबसूरत शहर हैं। लॉब सर्विस उज़्बेकिस्तान की, स्मैश ब्लॉक हुई, दोबारा बॉल क्रॉस होगी। अब उज़्बेकिस्तान को चांस मिलेगा। बहुत उम्दा डायगनल परपेंडिकुलर खेलते हुए पॉइंट और सर्विस उज़्बेकिस्तान के पास। अमीर तैमूर का मज़ार है समरकंद में, जिंदा शाही का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। फिर इमाम बुखारी का मज़ार है और 2 कदीम तरीन इस्लामी मदरसे हैं। बैक टू लाइव एक्शन। बॉल क्रॉस होगी, फिर चांस मिलेगा उज़्बेकिस्तान की टीम को, और अच्छा दिफा श्रीलंका का। बॉल क्रॉस हुई और सही तरह प्लेस नहीं कर सके थे स्पाइकर, और इस बार मौसर अंदाज से डबल ब्लॉक किया 13 नंबर की जर्सी में समीरा वेरा को। कोच 17-11। अच्छी कमांडिंग लीड 6 पॉइंट की उज़्बेकिस्तान के पास। ये रिप्ले में देखिए, डबल ब्लॉक किया गया। मॉन्स्टर ब्लॉक, स्टफ ब्लॉक कहा जाता है इसको, जब कोई इम्कान न रहे उठाने का। रूफ ब्लॉक भी कहते हैं। लॉब सर्व, बैक रो अटैक। दिखाया कि वो स्मैश करने लगे हैं, जैसे फास्ट बॉलर आखिरी लम्हों में एंगल को चेंज कर देते हैं और स्लो बॉल कर देते हैं। डिसीव किया उन्होंने। ये देखिए अच्छा कैमरा वर्क। ये देखिए 2 ब्लॉकर्स हक्का बक्का रहे और उनके हाथों के ऊपर से बॉल को प्लेस कर दिया। वेल प्लेड श्रीलंका। 12-17। सेंट्रल एशिया का बेहतरीन वॉलीबॉल टैलेंट शोकेस हो रहा है यहाँ इस चैंपियनशिप में, कावा में। और बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उज़्बेकिस्तान की टीम अब अपनी बर्तरी को 6 पॉइंट्स पर लेके जा चुकी है। ये बहुत जबरदस्त एफर्ट थी। मुगल स्टील रिप्ले आप देख रहे हैं। उम्दा स्पाइक, डायगोनल क्रॉस कोर्ट अटेम्प्ट, फिर ड्रॉप बॉल की कोशिश। अच्छा लिया लिब्रो ने। चांस मिलेगा उज़्बेकिस्तान को। खराब रिसेप्शन थी श्रीलंका की। बहुत जबरदस्त रैली, लेकिन पॉइंट जुड़ा उज़्बेकिस्तान की फेवर में। 2 दिलचस्प लम्हात थे इस रैली में। एक तो पैनकेक सेव इंचेस अबव द फ्लोर, और फिर जो एंटीना है उससे टकराया बॉल। नाज़रीन, जब बिल्कुल इंचेस अबव अपना हाथ चपटा करके उसको उठाया, बॉल को उठाया जाता है, तो उसको पैनकेक सेव कहा जाता है। और 19-12 बहुत दिलचस्प रिप्ले मुमकिन हो सकता है। 19-12। ओ, जवाबी हमला। 13-19। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो एक सर्वे हुआ था कि क्रिकेट की जितनी टीमें हैं आलमी उफक पर, उनमें सबसे शरीफ खिलाड़ी किस टीम के हैं। तो मुत्तफ़िका फैसला था श्रीलंका। जेंटलमैन बिहेवियर होता है हमेशा। बड़े पढ़े लिखे और वेल मैनर्ड खिलाड़ी होते हैं। वो जो कहा जैसे तख्लीक में खालिक का हुनर बोलता है, घर के माहौल का लहजे में असर बोलता है। तो श्रीलंका ये जी डिप्टी को मुतारफ़ कराया गया खुदा खुदा करके,
जैसे मैंने कहा कि बेपनाह टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, मगर थोड़ा सा ओवरवेट नज़र आए हैं। और कल जब मैं देख रहा था कि हैवी ब्रीथ भी कर रहे थे, और इस मौके पे कि जब लीड बड़ी बढ़ चुकी है, 20-14 का स्कोर है, कप्तान को बुलाया गया है ये 18 नंबर की जर्सी में। जैसे मैं कह रहा था कि जैसे तख्लीक में खालिक का हुनर बोलता है, घर के माहौल का लहजे में असर बोलता है, तो सबसे जेंटलमैन बिहेवियर क्रिकेट में कम से कम कहा जाता है कि श्रीलंकन प्लेयर्स का है। हमें याद है अर्जुना राणा टुंगा को हम देखा करते थे, जो रनिंग बिटवीन द विकेट में कहा करते थे कि बड़ा इकोनॉमिकल है, दौड़ते नहीं थे, वॉक करते थे। डेपुटी की सर्विस, फ्लैट सर्व, डबल ब्लॉक, फिर मौका मिलेगा उसी एंगल से। ओ यक के बाद दीगरे, बड़ा अच्छा दिफा, बॉल को बहुत उम्दा, व्हाट अ डिस्प्ले। श्रीलंका 2 मरतबा कामयाब ब्लॉक किया और फिर पॉइंट हासिल किया। वी गो टेल टाइम आउट। Welcome back. 2015 in the favor of Uzbekistan. पहला सेट जीतने के बाद अच्छा कमबैक रहा है श्रीलंका का दूसरे सेट में। तमाम तर मैच ऑफिशियल्स और लाइन जजेस को आप देख रहे हैं। डबल ब्लॉक की कोशिश, लेकिन बॉल डिविएट होकर साइड कोर्ट से बाहर गया। सर्विस और पॉइंट जुड़ा इन द फेवर ऑफ उज़्बेकिस्तान। पाकिस्तान की मेंस नेशनल वॉलीबॉल टीम ने आज नेपाल के अगेंस्ट शाम 5 बजे लियाकत जिम्नेजियम में मुकाबला करना है और एक अच्छे मुकाबले की तवक्को है। एक ऐसी नेपालीज टीम जो बैक टू बैक 2 5 सेटर खेलकर आ रही है और उनकी बैक होम बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मैच देखते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स में अगर सबसे नुमायां परफॉर्मेंस है तो पाकिस्तान वॉलीबॉल की है। विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनी अदर स्पोर्ट, बट वॉलीबॉल इज एट द टॉप। बहुत उम्दा स्पाइक सर्व, बैक रो अटैक, उज़्बेकिस्तान के स्पाइकर अपनी जानिब खेल गए। मौका दे रहे हैं श्रीलंका को कि वो छोटा सा दरवाजा अगर खुले तो उसमें से पीप इन कर सके। सोलह नंबर की शर्ट में श्रीलंका के सर्वर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 17-21 के स्कोर पे सर्विस करेंगे। स्पाइक सर्व अपनी जानिब खेल गए। बुनियादी तौर पे 3 तरह की सर्व होती है: स्पाइक, फ्लोटिंग सर्व, लॉब सर्व और स्विंगिंग सर्व। ये देखें आपने, लॉब सर्व थी, डबल ब्लॉक किया गया। 18 श्रीलंका, 22 उज़्बेकिस्तान। 20 मैचेस के बाद फैसला होगा कि कौन सी टीम। ये देखिए रिप्ले में, डबल ब्लॉक, बैक रो से अटैक था। 8 रोज तक 20 मैचेस के बाद कावा की जगमगाती ट्रॉफी किसका नसीब बनेगी, ये फैसला होगा। बहुत उम्दा 10 नंबर की जर्सी में उज़्बेकिस्तान के इस खिलाड़ी ने बड़ा नुमाइंदा ओबा बैक बड़ा अच्छा खेले हैं।
10 नंबर की जर्सी में। ये आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं, ओबा बैक, फ्लैट सर्व, ब्लॉकर के हाथों के ऊपर से जाते हुए 3 नंबर की जर्सी में अयश की ये स्पाइक थी। बहुत खुशगवार मौसम है, 6 मुल्कों के ये खिलाड़ी अपने साथ खुशगवार मौसम भी लेकर आए हैं। बहुत उम्दा बैक रो मॉन्स्टर स्पाइक। सेट पॉइंट पे उज्बेकिस्तान 24-19। इस तीसरे सेट, ये रिप्ले में देखिए, बैक रो से ब्लॉकर्स को टच करवाते हुए इतनी वैनम और फोर्स थी स्पाइक में कि ना ब्लॉकर रोक सके और ना बैक लाइन पे डिफेंसर कोशिश के बावजूद रोक सके। सेट पॉइंट। ओ वॉकिंग शॉट, क्लासिकल अंदाज। इसके साथ ही उज्बेकिस्तान तीसरा सेट 25-19 से अपने नाम करने में कामयाब हुआ। बेस्ट ऑफ 5 मुकाबले में उन्हें 1 के मुकाबले में 2 सेट की अब बढ़तरी हासिल है। इस तीसरे सेट में मुकम्मल डोमिनेट किया उज्बेकिस्तान ने, किसी मौके पे भी श्रीलंका को अपने स्कोर के करीब नहीं आने दिया। ये हाइलाइट्स आपके लिए महफूज की हैं। बैंक अल-फला एक छोटा पैकेज हमारी टीम ने आपके लिए बनाया, जिसमें जो सबसे खूबसूरत लम्हात थे इस सेट के, वो आपको दिखा रहे हैं। बैंक अल-फला हाइलाइट्स। ये वॉकिंग शॉट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये क्लासिकल अंदाज है, दौड़ते हुए स्मैश लगाते हैं। और ये जोंग 5G कावा मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 इको स्टार 25-19 से जीतकर 1 के मुकाबले में 2 सेट की बढ़तरी लिए हुए। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
So we are back for the fourth set between Uzbekistan and Sri Lanka. And this is the scoreline. Uzbekistan 2-1, they're leading. They won the first set, lost the second, came back in the third. So the fourth set is always going to be very interesting. Their captain Sobirov clicking in the third set. They rely so very heavily on two players. One, their captain Sobirov, the other one is 10, Heatherov. And for Sri Lanka, it had to be Dipati, but I can't see Dipati playing today. I haven't seen him in action. He is their top player. They haven't introduced Dipati as yet, as I remember, and I still can't see him on court. To me, he was their top player, their top performer. Was Dipati, it's not included. So to serve for Uzbekistan is going to be Morodov. Fourth set just about to get underway. Uzbekistan 2-1 in front. And so from Uzbekistan is going to be Muradov. Captain Soirov on your two screen. He is really happy with his team's performance so far. And also for regaining his form. Sandeepa on right side of your TV screen, and also so there is some issue. Match against start anymore. Marsh and Sandeepa you saw on your TV screen. Morodov still is waiting to serve. Morodov from Uzbekistan is just about to serve. Jagan from Sri Lanka. You're just watching him on TV. Jagan from Sri Lanka. Uzbekistan. Fourth set is just about to start. The upper official. Second from Sri Lanka, back on your TV screen. So serve now is coming from Muradov from Uzbekistan. Handled by Dilshan, ball goes across. It's set for Heatherov. And that was a pack of a dynamite right away. Heatherov killing it off. And that was just gorgeous. The type of start Uzbekistan needed. Now watch him in the slow motion. Down the line spike, and that was always going to go out of play. Handled by Tarusha, and this time it was Aish from Sri Lanka. Aish with magnificent spike. He absolutely thumped it. Aish on your TV screen. Now watch him in the slow motion again. One blocker, and he beats him so very easily. Libero Voriev had absolutely no chance in digging the ball up from that position. So serve nicely handled by Voriev down the right hand side. Heatherov looks slightly out of position, but still generated enough power to rip it through. As I mentioned earlier, he is one of the top players, one of two top players for his side. Heatherov. He looks slightly out of alignment. Still generated enough power behind that ball. This is something quite extraordinary. Handled by Banoj, and Aish goes down the line. Another kill for Aish. Number 3, Aish on your TV screen, and he is going to serve. Great play. Lays player info. Panadura, position middle blocker, height 198 centimeters.
So Mohammadiev with so off balance spike still gets the most out of it. This takes some talent. Just managed to swipe it off the hands of the blockers. Mohammadiev from Uzbekistan, what a player he is. What a great point for his side. Making it 3-2. Hakimov is going to serve for Uzbekistan. 3-2. His side in front in this set as well. Hakimov serve goes long. Well, miscalculation in the right way is going to be replays. They're introducing Boriev. Well, they're reintroducing Boriev there. Libero. So it's 3-all. Sri Lanka going to serve. Must win set for Sri Lanka if they are going to stay alive in this match. And Jagan serving for Sri Lanka. Nicely done. So that had put them completely out of system. Now they've got a free ball. Good opportunity. Vasanta. Vasanta with killer blow. And it was quick set. Vasanta was able to put his way in style. That was superb play. Quick set. Oh, clearly late for the blockers. They didn't anticipate this. It's a pretty clever play. Jagged with the serve handled by Boriev. Sets it down the right hand side, and Sobirov missed the target by some distance. Sobirov making far too many unforced errors in this match. Kane missing the court. He is truly underperforming in this set. Now it's in slow motion down the right hand side. Tried to create an angle, but goes well wide and goes long. This time it was Jagan from Sri Lanka. It's also going to be Sobirov, the captain of Uzbekistan. Jagan on your two screen again. 5-4, his side is leading. Sobirov into the net. Lackluster effort. Better effort was needed, but he ended up crashing straight into net. The captain, well, pretty disappointing show today. Not sure what exactly is the case, but we haven't really seen him making these many errors before. So Sobirov and his supporters must be underwhelmed by this performance. So Dilshan creating overpass and a put away. That was inevitable. Sandeepa it was. Well, very, very powerful serve from Tarusha Dilshan. Tarusha Dilshan, the server, very, very powerful serve. And that caused the overpass, and finish came from Sandeepa. And Tarusha still serve, very good serve, another overpass, but this time, oh, he's blocked, so they will have a recycle ball, not perfect setting. So now Uzbekistan with a free ball, and goes out of bounds off the hands of the blockers. Much needed point for them. Sri Lankans look dominant at this point, but against the run of the play, they managed to squeeze through the Uzbekistan team. And block, as you saw, was clearly late on this. Wingspan block he attempted, but didn't succeed. So Sandeepa again, recycle ball they will have. Martin setting it for Sandeepa again, and off the hands of the blockers goes out of bounds. Brilliant passage of play, little passage of play. Basanta now is going to serve. Sri Lankans are looking really, really impressive. 8-5 they're leading, 3 points separating these two. Mohammadiev handles the ball. Heatherov with a ripper. He absolutely gave it everything, and that decimated Sri Lankan defense on this occasion. Watch him in the slow motion. Look at the power of it. Jagan, the deep defender, couldn't dig that ball up. Oh, great save. It was Heatherov down the right hand side, back row, and another opportunity well covered by
Motion. Now they have a shot. So Uzbekistan down the left-hand side. Went for a drop. Heatherov was picked up very nicely. Sandeepa blocked. Sandeepa lost his footing. Off balance spike. Was blocked completely. He was completely shut down by the blockers. Sandeepa not impressed with his effort. Just was in the slow motion. Went for a drop. Was picked up. Sandeepa offered the opportunity. He didn't have the approach into that spike. So couldn't really generate the momentum he needed. Oh well, a bit of confusion. So as we start with a free ball and shoves the ball across. Heatherov with another kill to his credit. This is how he loves to play. Very smart, elegant player. The ball was set for him, but I think it was out of his reach for a spike, so he just pushed the ball across. Well, he all around it slightly. Sandeepa, well, on the pipe. Mohammadiev blocked. Not a good approach into the spike at all from Mohammadiev. He went straight into the blockers. I thought he would try to create an angle. He didn't, and he was stuck blocked on this occasion, Mohammadiev. 9-8, Sri Lankans are back in front. 1 point lead for Sri Lanka. To serve for Sri Lanka is going to be Molchan, number 10 Molchan, serving for Sri Lanka. And they're ahead just for 1 point. Razor thin lead. Must win set for Sri Lanka. Oh, he goes into the net. Pretty disappointing serve. 2 lows a serve and it crosses into the net. So Uzbekistan making, they are now at 9-all at par with Sri Lanka. World serving for Uzbekistan and handled really well and Sandeepa blocked. Oh, there's some controversy too. No, well, they've changed the call and now the scene is made in favor of Sri Lanka. The replay is going to be very interesting if you can watch it in the slow motion. Ball was set for Sandeepa and the net wash and perhaps going against them. Oh, nice handled by Boriev down. Heatherov with another majestic kill. On your TV screen, Heatherov from Uzbekistan. He is the man of the match so far. Just watch him again, goes down the line. Libero in the fine line, Manoj, the libero from Sri Lanka. He couldn't dig that ball up. Wasn't really defendable at all this time. Manoj handles it, quick set, and the ball is still alive. Just over the net, and the ball is set for Heatherov, but Heatherov again goes straight into the blocker's hands. Went straight, just tried to exploit the seam, but perhaps no seam available. And he was completely blocked. Not a clever play, I would say. Easily blocked. Didn't try to create any angle. Handled by Boriev down the right hand side. Sobirov. Well, block touch was not that bad. Nicely picked up. So now they have opportunity. And another go for Sobirov. Sobirov pushed the ball across. Easily picked up. So Sandeepa, very wild swing. And that ball has gone long. Oh, they're claiming a touch, not given. That was a wild swing. And he needed to be much more precise, much more skillful with that. That was very poor play, I would say. He was on the pipe, back row attack.
And he went long. So Vasanta creating a sharp angle. Not playing today, but Vasanta playing brilliantly. Now watch him in slow motion. Good angle created. Turns the wrist away from the blockers. Good skill. Step on the wrist at the last moment. Very skillful play. Nicely picked up. Pushed back off. After a very long time, we see him in action. And he was needed. Pushed back off. Brilliant put away. So Captain Sobirov on serve. It's 2-all. Fourth set. Very interesting play this fourth set. So from Sobirov, handled by Sandeepa. And Tarusha just tried to push the ball across. It's blocked! Brilliant bit of blocking. Pushback off again, part of that double block. And they absolutely shut down the spiker. Tarusha had no way through. That was a seamless block, a watertight block. Watch this again in the slow motion. Tarusha slightly out of rhythm and tumbles at the end. And so, to serve for Uzbekistan, their captain Sobirov goes into the net. They must be very disappointed. Making 13-all, very tough, very tight battle in this fourth set. Not really sure which way the game is going to go. Tarusha serving for Sri Lanka. Tarusha, number 5, Captain Sobirov. Not that happy with his own form and performance in this match. Tarusha's serve, handled by Mohammad Diaf. And Sobirov, back row from Sobirov. And what a kill that is. Well, that was strike with ferocious power. Sobirov, the captain, he was urging himself on. And what a great contribution. Just watch Sobirov. And Sri Lanka, block goes out of bounds, goes long. Well, the hands far too stiff for the hands of the blockers. And that block went long. It is 14-all. And Vasanta going to serve for Sri Lanka. Still, these two sides are going hand in hand. Handled by Heather off and swing from Sobirov. Nicely defended by Vasanta. And it was Sandeepa. Another unforced error from Sandeepa. He puts the ball long. The guilty party, Sandeepa, on your TV screen, made yet another error. Just watch him in action. 2 blockers. He tried to go over the hands of the blockers, but didn't have enough top spin on it to land inside. Handled by Tarusha. The ball shoved across. That's a big tab by the captain, and Sobirov completely off balanced and crashes right into the blocker's hands. He was in no position to come up with a full-blooded spike. The only option he had was to shove the ball or tip the ball across. So we could tell timeout. So Vigotel timeout comes to its end, and we are in this fourth set, where Uzbekistan are leading. They're leading already 2-1, and they're ahead in this set as well, 16-14. Will be interesting to see. Can this lead be good enough, be decisive? 16-14, 2 points are separating these two, and they're looking good to take this set as well. Number 8, which we're top serving for Uzbekistan, and they're ahead by 2.
16-14. Uzbekistan with the serve, handled by Sandeepa. The ball is set for Sandeepa, and off the hands of the blockers, goes out of bounds. Powerful spike from Sandeepa. On quite a few occasions we have seen him being blocked, but not on this occasion. Able to exploit the seam between the two blockers. Perfectly smashed. And to serve for them is going to be Lahiru. Perhaps for the first time on serve. And that's handled by Mohammad Diab. Heatherov! Well, that was absolutely hammered down by Heatherov. Absolute delight to watch. A treat, a feast to the eyes. What else could you really ask for? This was Heatherov, the player. Just watch him in the slow motion and enjoy this. Absolutely marvelous spike. What a player he is, Heatherov. So the serve for them is going to be Muradov. Toss the ball high and then sends the ball across. The ball is set for Sandeepa. Clinical finish, Sandeepa. This time down the right hand side on the opposite position. He puts away a brilliant spike. Now watch this. Getting into the action straight down the line, and libero Boriev had absolutely no chance to dig that ball up. The ball is set, another go for Heatherov, and Heatherov with yet another kill. This is Heatherov for you. As I mentioned earlier, he is the player of the match to me. According to me, he is the player of the match so far, who himself is on serve. The ball is sent across, handled by Sandeepa. Oh well, Trusha was blocked. Now they've got a chance, Uzbekistan, and this time the killer blow comes from the captain. Captain himself also contributing. Sobirov, now on your TV screen, he's the man responsible for this kill. And his side is now leading by 3. 19-16, Uzbekistan are ahead. And this lead could prove to be decisive. So now they're making a substitution. Charita is now back on. They've called off Jegan. Heatherov now serving. Handled by Manoj. Is set for Sarusha. They've got a recycle ball. Sarusha is having another go. Well defended by Boriev, and contribution this time from Mohammad Diab. Number 6, Mohammad Diab, with tremendous skill. Well, that was absolutely marvelous. What a blow for Mohammad Diab. Isn't he happy with his effort? Rightly too. So we go to a little timeout. So after we got a timeout, we are back. And Uzbekistan are in front now by 4 points, 2016. This lead could be decisive, could easily be. They're looking really good. Sri Lankans are staring down the barrel. And an uphill task in front of them. Mount Everest to climb. To Russia this time. Good angle, very sharp angle he created, turning the wrist away, and a kill, another kill to his credit. Now watch this in the slow motion down the left-hand side, and dexterously done. Ice serving for Sri Lanka. This side desperately needs 3 consecutive points, handled by Heatherov, and kill from Sobirov.
No, violation given against him. Oh, it went outside. It landed wide of the court. And now I watch this in the slow motion. Oh, well wide. So we could tell timeout. So we could tell timeout ends. Still 2 points between these two. 18-20. Sri Lanka are still behind. And Dice serving for them. 2 consecutive points for Sri Lanka. From 16-20 to 18-20. And Ice is going to serve for Sri Lanka. Toss the ball high, send the ball across. And Sabirov, this time no mistake made. On previous occasion he missed the target, but on this occasion he came up with a vertical blow. Almost perpendicular strike. Watch him flying into the action, gets nicely on top of it, and throws the ball down. Handled by Sandeepa, the ball is set for Sarusha, very fine block touch. Now the other opportunity, Mohammadiev with a very wild swing. Well, that was not needed. Sends the ball way out of bounds. 19-21, still these 2 points, still 2 points are separating these two sides. And Sharitha from Sri Lanka is going to serve. On 19-21, substitution, Martian being reintroduced, and Lahira is being called off. 19-21, Sri Lanka on serve, Charita's serve, handled by Heatherov, and Sabirov again. No one is going to pick this block touch, because this was struck with some ferocious power. What a wonderful player he is. 2 blockers ahead, and he had the ball off the hands of the blockers, flying out of bounds. So 22-19. 3 points ahead are Uzbekistan. Handled by Manoj, and is getting into the X. Sandeepa. Good placement. This was clever stuff. Very, very skillful. Very deft touch. A finished shot from Sandeepa. So 20-22. Deficit down to 2 points. Still 2 points between these two sides. So the serve is going to be Sarusha Dilshan. Sarusha serving for Sri Lanka. And 2 points are still separating these two sides. Sri Lanka 1-2 sets down, and they are in desperate need of winning this set to stay alive in this match. The ball is set again for Sabirov, and Sabirov brilliant yet again. Another crushing blow comes from their captain Sabirov. He looked off colour when the match started, but this time just back row off the hands of the blockers, and Manoj, the libero, had absolutely no chance of digging that ball up. And Sandeepa blocked. Heatherov, again part of that blocking party. And this was another spectacular display of skills from Heatherov. What a player, what an asset he is. Match point, Uzbekistan. Vasanta drops it. Vasanta, very, very skillful player from Sri Lanka. And he rolls the ball over the hands of the blockers. 3 more match points to deal with Sri Lankans. Vasanta on serve.
21-24. 3 consecutive points they need. 3 successive points to make a comeback. Which looks highly improbable, but nothing is impossible. 21-24. 3 match points still intact. As we are going to see Vasanta on serve. Sends the ball across. Handled by Heatherov. And finish come from Khoshbaktov. Winning this match 3-1 and very well deserved victory for Uzbekistan. Mainly due to a big contribution from their number 10 Heatherov, what a player. Sobirov, the captain, looked out of form, out of touch initially, but then what a great comeback from him too later on. But Heatherov was the player to watch out for. He is a great spiker. He is such a reliable blocker as well. A very, very strong blocker. Gave absolutely nothing away. So customary handshake at the end of the game. And Sri Lankans were simply outclassed. Uzbekistan turned out to be a far superior side. And they are winning this match 3-1. Big win for Uzbekistan, and Sri Lankans were no match for them. And Bank Alpla highlights of this fourth set. Just watch this. They were just relentless. Heatherov, see him in action. And the spiking, and then contribution from the captain Sobirov as well. And then at the end it was Khoshbaktov. What a great finish. And so Eagostar set score 25-21. Fourth set also goes to Uzbekistan. Uzbekistan winning this game 25-23, 22-25, 25-19 and 25-21. Brilliant all-round performance from them. So with this we are going to take a short break and we will come back with the second match of the day.